Yeah, hi friends, very good morning. Uh, I'm Pratik and I head the employee benefit in this organization called InsuranceManager.com. To brief you about the Insurance Manager, it's a couple of decade-old company, I would say to be more precise, 18-year-old organization servicing into the insurance industry, providing the insurance portfolios, servicing the insurance portfolio right from engineering, property, marine, liability, and employee benefit. When I say employee benefit, the seriousness to service this employee benefit that we have come up with our own portal, which is called Insure My Team. Basically, it's a healthcare platform integrated with insurance convenience, wellness, and healthcare all under one single roof. It gives me immense pleasure to welcome you all to host this webinar. And I'll be joined by my colleague, Ms. Monica Makwana, who is supposed to be the VP for our CSG vertical. And together we'll be taking you through live for this portal so that it can give you exactly the proof of concept how it works. We have branded this platform like Insure My Team, and as I told you, it's an employee healthcare platform. It comes with the HR portal as well as employee portal, both on the web-based and mobile app, to integrate the insurance, healthcare, and wellness under one single platform. As I take you further, let me just brief you about, give a fair backdrop at what prompted us to develop this app. In fact, I would say what prompted us to spend so heavily on this technology platform. I'll just take you 4 years back at the advent of COVID. In fact, before the advent of COVID, a lot of corporate had this insurance in place, group medical insurance in place, where the policy copies were somewhere in the mails or somewhere in the files. The awareness, or I would say the awareness of this policy was very less, very less. People were not very keen to understand what is the policy all about, what are the benefits in the policy, what are the coverages, what are the process of claim. इनफैक्ट आई जस्ट लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल एक केस स्टडी बताता हूँ जहाँ पे वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ वन ऑफ माय कॉर्पोरेट had taken this policy and wherein he was covered under the insurance, and then suddenly his wife delivered a baby boy. So he informed the HR to add this baby in the policy, and the HR by any chance missed out giving us these details. So normally when the endorsement done, the new fresh card is issued for the particular baby. He didn't get that card. He never bothered to check, and then the policy got renewed. Again, the new cards came for the entire family. He never opened up the envelope to check whether the cards are available in the policy or in that name is there in the policy or not. Couple of years went by, and then suddenly there was an incident where the baby was hospitalized. Then he opened up the envelope to see if to check the card for the cashless benefit, and he was surprised the card was not there. And more surprising was that since last 3 years, the baby was never added in the policy. So that is what the awareness is all about for the employees. They were not very keen to understand the policy and all. And simultaneously, HR also didn't bother to check whether the name is there in the policy or not. Then when the real requirement came for that insurance to avail the cashless benefit, that was not in place. So right at the time of then the COVID came. The COVID came, so a lot of employees were suddenly be more keen understand the policy because a lot of claims were coming in. They were keen to understand the policy, how to claim, what are the process, what are the benefits, what are the co-pay, is there any sublimit in case of any hospitalization. And when the employee started raising the queries, HR also started getting the same queries from the HR also. उनके भी सेम queries आते थे कि क्या covered है, क्या नहीं covered है. And the entire idea is to see that basically then we thought of developing this app and on the cloud so that it gives the easy access, or I would say the easy access to the platform where they can view the policy terms and condition. What are the coverages, what are the benefits in the policy, what is not covered, what is the claim process, how to download the health cards. The entire insurance convenience is being given on the portal for them to access this. The second aspect, the first is we spoke about insurance convenience. The second was the healthcare. When I say the healthcare is something like your doctor's consultation, your medical diagnostics on the discounted price. You can order the medicines on the discounted price. Not only this, you can have a nursing care support. You can have a free dental checkups in the policy. So this is all the part of healthcare which I'll be running through you individually or once we go the portal live. The third is a wellness part, which will give you a wellness is something like the wellness session, which are we doing online.
Earlier we used to do on-site also, and we are still continuing that thing. But once we have the option to have this wellness session on live on the portal every fortnight. And fourth is the flexi policy. The flexi policy is something like if any individual employee would like to have this additional benefit in the policy, like he want to have a top-up policy, that option is also available where he can buy the policy from the portal itself. Now we will try to take you through the portal session live, which will give you the entire idea how it works. For this, I would just switch the screen to our portal. So I'll hand over this button to my colleague Monica, who will take us through the portal live and what is covered in the basically how it works and how it looks like the entire dashboard. Over to you, Monica. Thank you. Thank you, Pratik, and good morning to all the wonderful audience. Thanks once again for being present on Saturday morning. To start with, this is the home page of the portal, which is curated specially as per the request. Oh, so we have a poll. Audience would request to participate on the polls. So 69% of the audiences have voted for all of the above, which means to say that we get very frequently get a query from an HR ki what is an active data, what is a CD balance, and what are the endorsement status. तो कई बार ऐसे ही होता है कि एचआर का फ़ोन आता है, मोनिका मैंने लास्ट मंथ एंडोर्समेंट तो दिया था लेकिन मुझे एक्टिव डेटा नहीं मिल रहा है, क्या करें? देन earlier when we used to work on a conservative way जहाँ पे वो रिक्वेस्ट देते थे, फिर we used to tell them हाँ मैडम मैं आपको इंश्योरेंस कंपनी से मंगवा के देती हूँ, which used to take couple of days, and the system and the process used to get prolonged. But here we have an two access wherein HR has an access and employee has an individual access over here. So employee access will have a simple look alike पेज ओवर हियर जहाँ पे उसको उसके पॉलिसी के डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पे उसकी ग्रुप हेल्थ पॉलिसी अपलोडेड है, कॉर्पोरेट की ग्रुप हेल्थ पॉलिसी अपलोडेड है तो ग्रुप हेल्थ पॉलिसी दिखेंगी, फिर प्लान्स दिखेंगे कि क्या कवरेजेस है, क्या सम इंश्योर्ड्स हैं, हॉस्पिटल नेटवर्क लिस्ट दिखेगा उसको वहाँ पे, और उस अगर उन्होंने कोई क्लेम किया है तो क्लेम कहाँ तक पहुँचा है, सबमिटेड है, डेफिशिएंसी रेज हुआ है, पेमेंट अंडर प्रोसेस है या पेमेंट हो गई, ये सारे स्टेटस ही वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं. और अगर हम उसको सेम एज एन एचआर मोड पे स्विच करते हैं तो एचआर का डैशबोर्ड में एचआर को एंटायर पॉलिसी का परव्यू दिख जाएगा, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ लाइफ्स कितने हैं पॉलिसी में, वो how many endorsements have been processed under the policy, what is the CD balance can be seen from the tab member. So once we click on a member tab, you'll get to know कि what is the policy definition के हिसाब से सारा आपको दिख जाएगा कि what is the total number of lives as briefed, it is 104, how many spouses are covered, how many employees are covered, how many children are covered, कितने parents covered है, उन सारों का breakup आपको दिख जाएगा. And you can see the excel sheet, the name of all the employees along with their dependents being shown below, and उनका स्टेटस भी दिख रहा है कि वो एक्टिव है कि डिलीटेड है. अपार्ट फ्रॉम दैट ऊपर राइट हैंड साइड पे टैब है जहाँ पे दिख रहा है कि एक्टिव है, पेंडिंग है या डिलीटेड है, तो आपको अगर वो भी चेक करना है कि आपने किस एम्प्लॉयज को डिलीट किया, बिकॉज कभी कभी मुझे ये भी क्वेरीज आती, मोनिका लास्ट मंथ मैंने एक्स एम्प्लॉय का डिलीशन डाला था कि नहीं, मुझे चेक करना है, मैंने एक्सेल शीट में तो भेजा था लेकिन हुआ है कि नहीं, आई एम नॉट कंफर्म. देन वी यूज्ड टू से कि अरे मैडम आपने भेजा है तो हमने तो प्रोसेस किया ही होगा. बट देन अगेन वी यूज्ड टू गेट बैक टू देम, चेक करते थे और उनको रिवर्ट करते थे. बट हियर दे जस्ट हैव एन एक्सेस ओवर अ क्लिक ऑफ अ बटन
कि वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि कितने लोगों को हम लोगों ने एज ऑन डेट डिलीट किया है। ये तो आपको यहाँ पे नॉर्मल पेज पे दिख रहा है। इफ यू नीड टू डाउनलोड एन एक्सेल, यू हैव एन बटन ऑन द राइट हैंड साइड विच शोज एंड डाउनलोड, तो आप वहाँ से एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई एडिशन एंड डिलीशन भी करना है तो आपको मैनेज बटन भी दिख रहा होगा पर्पल कलर में। यू कैन अपलोड द डेटा ओवर देयर, that data would be sent to us via mail and the endorsement would be processed। जैसे कि सिंगल एंट्री यहाँ पे दिया गया है, तो सिंगल एंट्री में हम क्या ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की स्पाउस, किसी का शादी हुआ है तो स्पाउस बाय मैरिज, किसी को न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो बेबी बाय बर्थ। सो ऑल दिस एंडोर्समेंट्स कैन बी प्रोसेस थ्रू एंड सिंगल एंट्री। अगर नॉर्मल एंडोर्समेंट एंड डिलीशन है तो बल्क एंट्री करना है। जैसे ही आप बल्क एंट्री के बटन पे क्लिक करोगे, एक एक्सेल शीट पॉपअप होगा जिसमें एक फॉर्मेट, प्री डिफाइंड फॉर्मेट मेंशन है। आपको उसी फॉर्मेट में आपकी एक्सेल शीट से डेटा को कॉपी पेस्ट करके सबमिट करना है एंड द सर्वर विल सेंड अस द डेटा एंड एंडोर्समेंट वुड बी प्रोसेस सब्जेक्ट टू द सीडी बैलेंस। नाउ मेनी अ टाइम्स क्वेरी ये भी आता है कि सीडी बैलेंस कितना है मेरा, ये एंडोर्समेंट प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको एचआर को फ्लोट बैलेंस भी दिख जाएगा कि मेरा इतना बैलेंस पॉलिसी में अवेलेबल है। उसके बाद उन फ्लोट बैलेंस भी दिख जाएगा। इसके अलावा फिर मेनी एम्प्लॉइज कम टू द एचआर सेइंग दैट कि अगर ग्रेड वाइज सम इंश्योर्ड है पॉलिसी में, तो दे कम एंड आस्क मैम मेरा कितना सम इंश्योर्ड है, कैन आई नो दैट, मैटरनिटी का लिमिट कितना है, रूम रेंट का लिमिट कितना है, सच क्वेरीज कम अप। तो ये यहाँ दिस डैशबोर्ड, वंस यू क्लिक ओवर अ बटन ओवर देयर, यू कैन सी की पॉलिसी में क्या क्या कवर्ड है, राइट फ्रॉम योर सम इंश्योर्ड, हॉस्पिटलाइजेशन, रूम रेंट लिमिट, मैटरनिटी लिमिट, आपका पॉलिसी में कॉर्पोरेट बफर है कि नहीं, बेबी डे वन कवर है कि नहीं, प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस कवर्ड है कि नहीं, तो सारे भी कवरेजेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज नॉट कवर्ड अंडर द पॉलिसी कैन ऑल्सो बी सीन, जैसे कि डेंटल नहीं कवर्ड है, ओपीडी ट्रीटमेंट नहीं कवर है, फॉरेन ट्रीटमेंट नहीं कवर है, ये सारी चीजें भी यहाँ पे दिख जाएगी। नाउ इमरजेंसी में कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो क्वेरी आती कि मैडम मैं लोकेटेड हूँ मीरा रोड में, तो मीरा रोड का कोई हॉस्पिटल नेटवर्क में है कि नहीं है, मैं कैसे पता लगा। सो इट इज़ वेरी इजी। आपको 3 टैब्स दिए गए हैं, आइदर आप हॉस्पिटल का नाम लिखिए या सिटी का नाम लिखिए या पिन कोड नंबर डालिए, तो उस सिटी आइदर ऑफ द वन यू हैव टू फिल इन द डिटेल्स, वो आपको उसके हिसाब से हॉस्पिटल्स नेटवर्क में है कि नहीं है नीचे पॉप डाउन हो जाएंगे। आपने इधर देखा कि जैसे ही पिन कोड डाला तो इस पिन कोड में कितने हॉस्पिटल्स नेटवर्क में है अलोंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ योर इंश्योरेंस कंपनी एंड द टीपीए, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे एंड यू कैन चूज। एंड यहाँ से आपको और एक बटन है व्हाट्सएप की, आप वहाँ पे डायरेक्टली हॉस्पिटल को कनेक्ट कर सकते हैं टू टेक एन अपॉइंटमेंट और टेक द एडमिशंस। नाउ वी गो टू पेमेंट मोड। पेमेंट मोड में जैसे कि अगर एचआर ने कभी कोई पेमेंट इसमें सीडी बैलेंस में डाला है तो वो पेमेंट के डिटेल्स भी उनको दिख जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको एंडोर्समेंट्स उन्होंने कितने करे हैं ड्यूरिंग द ईयर अलोंग विद द पर लाइफ प्रीमियम और एंडोर्समेंट प्रीमियम। से फॉर एग्जांपल इधर दिख रहा है कि एंडोर्समेंट नंबर 5 में देयर वाज एन डिलीशन, इट सीम्स इसके लिए बैलेंस माइनस में दिखा रहा है विच इज 582। तो ये सारी चीजें मिल जाएगी। दिस पार्ट द सीडी बैलेंस और पेमेंट पोर्ट पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एचआर को भी आगे अकाउंट्स वाला बहुत बार पूछता है कि मैडम आपको हमने पैसा तो दिया था लेकिन आपने मुझे उसका टैक्स इनवॉइस नहीं दिया या एंडोर्समेंट कॉपी नहीं दिया। तो अगेन दिस इज अवेलेबल एट अ क्लिक ऑफ अ बटन वेयर एचआर कैन सी कि ये एंडोर्समेंट्स यहाँ पे अपलोडेड है और वो डायरेक्टली एचआर को दे सकते हैं। सो यूजुअली जब हम नॉर्मल प्री कोविड या प्री टेक हम जब काम करते थे तो हमें रिक्वेस्ट आता था, यूज टू टेक कपल ऑफ डेज और 3 days की भाई ये मुझे एंडोर्समेंट का कॉपी चाहिए, अकाउंट्स वाले को मिला नहीं है, मुझे भेज दो। वी यूज टू गेट बैक टू द इंश्योरेंस कंपनी से वापस मंगा के आपको देते थे, तो दिस यूज टू टेक टाइम। बट हियर
this being uploaded on a cloud and given an access to you, you have to just log in into your ID and get the search for the endorsements and give it to your accounts team, so your query is being sorted and resolved. Broker ID is basically is in settings which can help you to give the rights to the other employees to access the other features of the policy. So this can be taken one to one. Now we go down to reports. रिपोर्ट्स इज नथिंग बट विल शो यू कि आपका पॉलिसी में आपने हाउ योर पॉलिसी इज बिहेविंग, जैसे कि आपने टोटल प्रीमियम कितना दिया था, पॉलिसी में क्लेम्स कितने हैं, काउंट ऑफ क्लेम्स कितने हैं, कैशलेस वर्सेस रीइंबर्समेंट का भी वो एनालिसिस आपको दिखा देगा, रिलेशनशिप वाइज एनालिसिस दिखा देगा कि आपने जैसे कि अगर आपकी पॉलिसी में सेल्स, स्पाउस, टू किड्स, टू पेरेंट्स कवर्ड है, तो किस रिलेशन से ज़्यादा क्लेम्स आए। जैसे कि इस पॉलिसी में दिख रहा है कि एम्प्लॉय रिलेटेड क्लेम्स आर 44.4%, मदर रिलेटेड क्लेम्स आर 37.8%, वेयर इज वाइफ्स से हमें 17.8 का क्लेम्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप नीचे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा आइटम वाइज along with the claim number, date एंड पेमेंट डेट की किसका क्लेम था और कितने दिन में सेटल हुआ एंड व्हाट वाज द सेटल्ड अमाउंट। दिस ऑल डिटेल्स कैन बी रिफ्लेक्टेड ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। उसके अलावा विल शो यू एन एनालिसिस बेस्ड ऑन द डिसीज वाइज ऑल्सो कि मेटर्निटी से कितने क्लेम आए थे, जनरल सर्जरी से कितने क्लेम आए थे, ये सारे एनालिसिस भी दिख जाएगा। लास्ट एंड नॉट लीस्ट द क्लेम्स रिजेक्टेड हुए हैं या अंडर प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। So from here onwards, I hand it over to Pratik to take on to the employee wellness and other value-added services being curated in the web access or a mobile app. Pratik, over to you. Yeah, thanks, Monica, for taking us to the portal live on the insurance convenience part. For the healthcare and wellness, I will have to switch the tab to employee mode. So normally, as these are basically employee-oriented benefits, so basically you will see that a lot of benefits are mentioned over here, which comes for the employer free of cost. Now I'll start with the doctor's consultation under the healthcare benefit. You might be aware, like post prior to COVID, before the advent of the COVID, online consultation or teleconsultation was basically illegal. The Indian Medical Council didn't allow this thing to be there. So at the time of COVID, many of the employers, people were skeptical going to the clinic for minor treatment like cough, cold, or fever sort of thing. So for that thing, the एंड द कोविड था तभी इंडियन मेडिकल काउंसिल ने लीगलाइज कि आप यूज कर सकते हो डॉक्टर मेडिकल टेलीमेडिकल और मे बी ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन. So that is what prompted us to get this thing incorporated into this portal. When we are giving you a free doctor consultation, you just have to click it over here, and you can see this doctors which are available live over here, which you can consult free of cost. Now you can see it's mentioned free of you, free for you. That basically whoever is has been onboarded into the system can use this benefit over here. They just have to click on consult now, and then accordingly, okay, then one more portal. I would request you to. We wanted to this to be more interactive. That's the reason we have put the polls over here. So I would request you to please participate in this polls. Right. So you can say you can just click on the consult now. Within 30 minutes, your online consultation will be lined up. So once the doctor, I just like to give you one example over here. मेरे पास एक actually में case study है जहाँ पे one of the employee from Bangalore whose parents were residing somewhere in native near the Udupi, and he was working Bangalore. So he had used the services. So I asked him what was the experience. So what he said कि earlier whenever ऐसा कुछ डॉक्टर कंसल्टेशन या ऐसा कुछ आता था, आई यूज्ड टू कॉल माय पेरेंट्स टू बैंगलोर. तो वो पूरे रिपोर्ट्स लेके आते थे क्योंकि वहाँ पे उनके मेडिकल फैसिलिटीज इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वहाँ पे दे यूज्ड टू कम टू बैंगलोर on with an employee's place, and then employee used to take a OPD from the doctors which are there in the Bangalore place.
और फिर बाद में 4-5 दिन का पूरा प्रोसेस होता था, उनको आना, मेडिकल रिपोर्ट्स लेके आना, ये सब करना। नाउ विद दिस थिंग इज कि अभी क्या होता है कि नॉर्मली आई जस्ट लाइंड अप द कॉल ऑन डॉक्टर, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन लेता हूँ, आई कनेक्ट व्हाट्सअप टू देम ऑल्सो, उनको व्हाट्सअप पे मैं उनको भी कनेक्ट कर लेता हूँ, और कंसल्टेशन ऑनलाइन ही हो जाता है, डोंट हैव टू कॉल देम टू द बैंगलोर। तो नाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग बेसिकली ऑन द एटलीस्ट सेकंड ओपिनियन और कंसल्टेशन जो है वो ऑनलाइन हो जाता है, तो उनके लिए उनको बैंगलोर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दैट इज हाउ इट इज वर्किंग एंड ही हैज एक्सपीरियंस दैट थिंग लाइव, so it was a very positive feedback from that guy. But coming back to this thing, so once the portal doctor consultation हो गया है, then doctor might prescribe you certain medicines. So medicines आपको यहाँ पे we have tied up with Farm Easy, wherein you can just upload your prescription and put your address, make the discounted payment जो करना है आप कर दीजिए, and then the medicine will be delivered to your residence. थर्ड केस है कि अगर डॉक्टर आस्किंग यू टू अंडरगो सर्टन, बेसिकली आई वुड से सर्टन डायग्नोस्टिक्स, तो यू कैन बुक द दिस थिंग फ्रॉम योर इटसेल्फ, डायग्नोस्टिक आपके सैंपल्स कलेक्ट करने आपके यहाँ पे आ जाएंगे, एंड देन यू कैन बेसिकली, सॉरी फॉर द डायग्नोस्टिक वी आर टाइड अप विद फार्म इजी, so you can book your appointment, the people will come to your residence, collect your samples, and then they will deliver the reports online itself on the WhatsApp, through WhatsApp. Many a times we have come the got the query like employee अलग एक metro में रहता है, town में रहता है, many a times happen कि after post surgery there is lot of support required, so in that case we are tied up with free surgery care assistant, वहाँ पे आप यहाँ पे free care assistance ले सकते हो free of cost. Then you have doctor nursing charges, मतलब normally nursing बहुत बार होता है कि एक hospital यहाँ पे होने के बाद discharge घर पे आने के बाद you need certain nursing care, for that thing we have 25% discount for this nursing camp. Then mental wellness is also available over here, and most important, many a time we get a doctor's consultation कि हमको डॉक्टर कंसल्टेशन, डेंटल कंसल्टेशन चाहिए, तो बेसिकली दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल ओवर द थिंग. नेक्स्ट वी हैव वेलनेस सेशन. वेलनेस सेशन, व्हेन आई टॉक ऑफ वेलनेस सेशन, हम पहले भी वेलनेस सेशन करते थे. ओके, देयर इज वन मोर पोल, आई वुड रिक्वेस्ट यू जस्ट पार्टिसिपेट इन दिस पोल. So this, by answering this poll, we will get an idea, fair idea, like what is the requirement from the HR. So this will help us to make new updates, और अपने आप को अपडेट करने का मौका भी मिलेगा हमें. तो वेलनेस सेशन, मैंने से वेलनेस सेशन पहले भी करते थे, ऑनलाइन करते, ऑफलाइन करते थे, ऑन द क्लाइंट साइड करते थे. तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक there was one case when I got a request from one of the HR. We wanted to, it was a manufacturing unit. So the average age of that employees was somewhere around 46-47 के आसपास से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की वर्कर थोड़ा एक्सपीरियंस थे, तो उनकी एज थोड़ी ज्यादा थी. तो दे आस्क्ड अस टू हैव दिस सेशन ऑन डायबिटीज. So we got one diabetologist for that particular session. हमने वहाँ पे किया. There were almost 90 employees who participate in that particular session. बट एक्चुअली जो डायबिटीज जो सब्जेक्ट है, दैट वो सब्जेक्ट जो डायबिटीज पेश वहाँ पे वर्कर्स थे उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था. दे गॉट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. तो आई वुड से जो इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाज समवेयर ऑन 10 to 12%. तो अगर 90 लोगों को गिनो तो मैं उनको इंटरेस्ट खाली 10 से 12 लोगों का था जो एक्चुअली वे सफरिंग फ्रॉम दैट एलिमेंट. बट व्हाट अबाउट द अदर पीपल, तो उनके लिए इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं था. So everybody has their own requirements. Somebody wanted to understand on diabetology, somebody wanted to understand ergonomics, किसी को कुछ और requirement थी. So it is practically not possible to do each and every session. So what we did, we tried to get this thing online. So when I say online, every fortnight, I would say every 20 days, we are doing certain. Okay, one more poll is coming. What kind of wellness webinar would like to conduct for your employees? Okay. Right. So when I say every fortnight, every 20 days, we are doing this session. So you can see the next session, which is lined up. That is lined up on, sorry, that is lined up on 21st of March, which is the productivity strategies. Then after that, we have a session on de-stress with every breath. And then we have one session on anybody can dance. So these are sessions which normally employees who are on board into the system will get a mail for them to register on this. Once they register, they will get a mail, joining mail, where you can connect to that mail and attend this session live. There are cases where the possibility is that the employee is not able to attend the session for some reason, but that nothing to worry. There are few sessions with the past sessions which are live over here. They can attend those sessions at their convenience.
जब भी उनको देखना है, आप वो सेशन अपने कन्वीनियंस टाइम के हिसाब से दे कैन वॉच दिस सेशंस लेटर ऑन. So we have gone through the insurance convenience, what my colleague Monica has taken through. We have gone through the healthcare benefit, and we have gone through the wellness sessions also. Now we have one more option wherein that we call a flexi options available, where you can, in any individual employee, can purchase a top-up policy from here itself. So when I say the flexi policy, there are a lot of requests coming from the HRs, from the employees, like on multiple requests that somebody wants to increase the sum insured, somebody want to cover their parents, somebody want to top up policies, all of the, or maybe this options we are we are live with top up as of now. We are coming very soon. We are coming with the option to add the parents also into the policy. So these options are very much available, and we'll be doing it very soon. So as of now, we have a top up options available wherein the employee has the option to have a additional sum assured benefit. Normally, what happens when the corporate buy the policy, that the policy structure, the covers are majorly structure किया जाता है कि somebody sum assured fixed होता है for particular grade wise employees के लिए sum assured fixed होता है. There are chances when the employee wants to increase the sum assured, saying कि मैं खुद पैसा भर दूंगा, I'll pay the additional premium for higher sum assured. So those are not features are not available in the corporate policy, but for the employee individually can buy this top up policy from here itself. The top up policy comes with certain deductible. तो उनका जो बेस पॉलिसी सम इंश्योर्ड रहेगा दैट विल बी ऑटोमेटिकली वहां पे डिडक्टेबल के तौर पे यूज किया जाएगा, एंड दे कैन हैव द additional top up policy individually and buy from here itself. Even it's a totally employee policy, even if the employee leaves the organization, he can carry this policy along with him. It's nothing to do with the corporate. This is the personal insurance for the employee, जहाँ पे वो खुद अपने लिए buy कर सकता है. So this is something bit about the flexi policies. Now, last but not the least, I would like to add one more thing. As I said earlier, we have servicing a lot of manufacturing units. And when I said the manufacturing units जब होता है तो वहाँ पे बहुत सारे employees not with a higher age, उनके 50, 52 वाले age भी होते हैं with the experience. They are not that tech savvy. उतने tech savvy नहीं होते हैं. They are not comfortable using the portal. They are not comfortable using the mobile app. But nowadays, you can see the most of people are very much comfortable using the WhatsApp. So when I say WhatsApp, we have WhatsApp chatbot over here wherein employee can, if the employee is registered on this portal and he shared the mobile number which is onboarded into the system, we have WhatsApp chatbot for this particular IMT portal. So it's very simple to use. I just put my name is already onboarded into here. So I'll just put my name. I just put hi. So automatically will reply back. So it is coming like, welcome Pratik. How can I help you? So I wanted my download my, that's an emergency. I want to download a health card. So I'll just put my, which is there in the my policy details. I'll put one. It will reply back like what are the queries. So I will say I want to download my health card. That's the emergency. So I will just put three. So he's asking me whose card I wanted to download. So I want my own card. So I just put one. That is how simple it is. My health card is automatically downloaded over here. I can just WhatsApp it to the hospital TPA for my cashless benefit. Not only this, you can understand what is the maternity limit in this. I will just put three. They wanted to know about the maternity benefits. What is the maternity limit in this policy? So I'll put 5. So it's showing me what is the maternity limit, what are the things. So you can see the entire chatbot, the detail of your policy can be available through the WhatsApp chatbot also. So this is how convenient it is. It's not only that we have come up with the portal, we have come up with the mobile portal, mobile app, we have come up with the portal as well, and simultaneously with the WhatsApp chatbot. So this is how the entire idea about this IMT Health Insure My Team app portal. I would that's all from my end. Now, if there are any questions, I would any queries are coming up, please you can put that question in the Q&A. We'll be more than happy to answer those queries.
Okay, I don't think any questions are coming up. So with this, I would like to give a vote of thanks for all the participants who had taken out the time on Saturday. There's one question coming in. Who do we get the credential? Who do we get the credential? Is my policy's renewal? When do we get the credential? Okay, if we can connect. So when do we get the credential? So in case if your HR has opted for this benefit, which is free of cost along with your medical insurance, you can have this credential where user ID password will be given to you and you can onboard into the system. Is my policy is renewal? I didn't get the answer question, please. Is my policy is renewal? So yeah, this agar if you're talking about the corporate policy, it is renewed every year on year, or if you're talking about the top up policy, it is also a annual contract which you can renew at your convenience. So what I'll do, if any queries are there, please connect to us over the phone. I'll share my number over here. So with this, I would like to thank all the participants who attended this session on the Saturday, giving that time. Uh, Maybe we are running short of time. Maybe there are questions which might come up later on, and you can connect to us over the phone, and we'll be more than happy to answer them. If you require, we can connect personally also over the meeting. And if anything is required, do connect us. Our company name is already there, InsuranceManager.com, which are available. We have the website. You can connect to us, and we'll be more than happy to answer your queries. With this, thank you all of you. Thank you very much.